Hi guys, welcome to my another video. Today we will make triggered drawing with Dome's watercolor. So let's get started the video. तो हे गाइस, इस कलर के साथ हमें एक छोटी सी ब्रश मिल जाती है जो कि इस तरीके की है एंड मैंने इसी ब्रश का यूज़ करके इस ड्राइंग को पूरा कंप्लीट किया है। तो बाय द वे वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट द कलर। तो इस ड्राइंग को मैंने इसकी बैकग्राउंड से स्टार्ट करी है एंड अगर आप वाटर कलर का यूज़ करके ड्राइंग करते हो तो उससे पहले आपको वाटर के थ्रू इस पर एक लेयर दे देनी होती है ताकि आप इस पर कलर अप्लाई करो तो अच्छी तरीके से पेज पे ऑफ हो जाए। सो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी जो इसकी स्किन टोन्स है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। आई मीन कि इसकी जो स्किन टोन्स है वो थोड़ी सी ऑरेंज एंड येलो टाइप की है। सो इस स्किन टोन्स को देने के लिए मैंने पहले स्किन कलर का यूज़ किया था, दैन सेकेंड लेयर देने के लिए मैंने ऑरेंज एंड येलो कलर का यूज़ करके इस स्किन टोन्स को ईजिली दिया है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस कलर के साथ एक छोटी सी प्रोसेस मिल जाती है, तो उसी का यूज़ करके मैंने इस सारे ड्राइंग को कंप्लीट किया है। तो jab मैंने इसकी ग्लासेस ड्रॉ करना स्टार्ट करी तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा चैलेंजिंग वर्क लगी बिकॉज इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग देने में मुझे काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग लगा, बट स्टिल आई लव चैलेंज। सिंपली कुछ इसी तरीके से मैंने इस पूरे ड्राइंग को कंप्लीट किया है। कीप वॉचिंग एंड एंजॉय द वीडियो। Doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. I'm here right now. Doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. I'm here right now. Try to puff on the right side, put it up in your mind. But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. I'm here right now. इस वीडियो में कुछ इतना ही था। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को करिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।